हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम नया जो यूनिट है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये यूनिट 9 है और इसका नाम है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। तो जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है वो क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, द स्टडी ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज़ असेंशियल इज़ they are not separate, both are concerned with the achievement of organizational goals. Management is a subset of administration. To understand its importance in the field of education various aspects need to be studied. तो एजुकेशनल मैनेजमेंट है वो ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इज़ कंसर्न विद द ऑब्जेक्टिव, टारगेट्स एंड गोल ले डाउन बाय द board of director and institution. Educational management is concerned with the achievement of result. It is a progressive, innovative because its emphasis on results. This result is easily measurable. Management implies on a orderly way of thinking. It describes in operational terms what is to done, how it to be done, and how we know when we have to done. Management is a method of operation. Good management should result in an orderly integration of education and society. Educational management in broader perspective covers the following: setting direction, aims and objective in educational organization and institutions, planning for progress of the program, organizing available resources, people, time and material, controlling the implementing process, setting and improving organizational standard. Importance of educational management. So it includes the study of various theories of management which define and describe the role of responsibility of the educational manager and develop managerial skill. It includes the study of educational planning at macro level, its goal, principles, approaches and procedures. At a micro level, it helps in understanding and facilitate institutional planning and educational administration. It helps in decision making, problem solving and communication and information. It helps in planning of co-curricular activities, academic and preparation of timetable. Function of educational management. It helps in curriculum activity management, helpful in evaluating student achievement. It deals with material and institutional effectiveness. It improves and teaching learning process through motivating staff and student. It facilitates the maintenance of school records, financing and budgeting. It creates healthy and conducive school climate. एंड प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट जिसमें डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इक्विटी, order and discipline, initiative, subordinative of individual interest and general interest, और यूनियन इन स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें रहेगी। और ये प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है वो क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक और प्रिंसिपल्स हमने देखे। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो और उसका जो इम्पोर्टेंस है, इनके जो प्रिंसिपल्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन।